गुड मॉर्निंग पिला माने आज आमे एक्सरसाइज 1A रो 7 नंबर 8 नंबर एवं 9 नंबर करिबा 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची निम्न रे प्रदत्त सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हेले कोन कहूची समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हेले अनन्य समाधान संभव हवा अर्थ कोन a1/a2 is not equal to b1/b2 हला हेले प्रत्येक क्षेत्र रे k रो मान केते हबो अच्छा प्रथम बीट कोन दउची x - 2y - 3 = 0 आ गोटे कोन देछि 3x + ky - 1 = 0 एठी a1/a2 केते हबो a1 केते 1/a2 केते 3 is not equal to b1/b2 b1 केते -2/b2 केते k that implies k is not equal to -6 अर्थात k ର मूल्य 6 व्यतीत अन्य समस्त मूल्य पाई किंबा तमे एमिति कहि परिबो k is not equal to -6 हेले सह समीकरण द्वयर समाधान अनन्य है बुझि पाइलो -6 व्यतीत आ जहा हेले मध्ये एटा हबो कोन ना समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हो 2 नंबर कोन कहूची kx - y - 2 = 0 6x + 2y - 3 = 0 एठी a1/a2 केता हबो k/6 = -1/2 that implies k not equal to -6/2 जोटा होची केते -3 अर्थात k not equal to -3 पाई सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव हबो बुझी पाइलो 3 नंबर बीट कोन कहूछ kx + 3y + 8 = 0 12x + 5y - 2 = 0 एठी a1/a2 केता हबो k/12 is not equal to 3/5 that implies k is not equal to 12 * 3/5 36/5 36/5 अर्थात k ର मूल्य k is not equal to 36/5 हेले सह समीकरण द्वयर समाधान कोन हबो अनन्य हबो सेमती चतुर्थ बीट कोन कहूची kx + 2y = 5 3x + y = 1 ताले a1/a2 केता हबो k/3 is not equal to 2/1 that implies k is not equal to 6 अर्थात k ର मूल्य not equal to 6 हेले सह समीकरण द्वयर समाधान अनन्य हबो फिफ्थ बीट कोन कहूची पंचम बीट x - ky = 2 3x + 2y + 5 = 0 x - ky ताले a1/a2 केता हबो 1/3 is not equal to -k/2 that implies k is not equal to -2/3 अर्थात k is not equal to -2/3 हेले सह समीकरण द्वयर समाधान कोन हबो अनन्य हबो 6th बीट कोन कहूची 4x - ky = 5 आ गोटे कोन कहूची 2x - 3y = 12 एथिरे a1/a2 केता हबो 4/2 is not equal to -k/-3 माइनस माइनस कटि गला ताले k is not equal to 3/2 sorry 3 into 2 = 6 ताले k is not equal to 6 बुझी पाइलो ताले k is not equal to 6 हेले सह समीकरण द्वयर समाधान कोन हबो अनन्य हबो बुझी पाइलो ती जिंस 8 नंबर क्वेश्चन तापरे जिबा 8 नंबर क्वेश्चन कोन कहूछ निम्न रे दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिले माने कोन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 असंख्य समाधान रहिले प्रत्येक क्षेत्र रे k ର मान स्थिर करो अच्छा देखो 7x फर्स्ट बीट कोन कहूची 7x - y - 5 = 0 21x - 3y - k = 0 that implies 7/21 is equal to -1/-3 is equal to -5/-k that implies 7/21 is equal to 1/3 is equal to 5/k ताहाले 1/3 is equal to 5/k हेले
k इज इक्वल टू केते हबो 15 k इज इक्वल टू केते हबो 15 अर्थात k ର मूल्य 15 हेले सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव हबो। 2 नंबर बिट कोन कहूची 8x plus 5y minus 9 equal to 0 kx plus 10y minus 18 equal to 0 ताले एठी केता हबो 8 by k is equal to 5 by 10 is equal to minus 9 by minus 18 that implies 8 by k is equal to 1 by 2 5 by 10 टा केता 1 by 2 एटा 1 by 2 हे गला is equal to 1 by 2 that implies k is equal to 8 into 2 is equal to 16 अर्थात k ର मूल्य 16 पाई सह समीकरण द्वय कोन हेबे ना असंख्य समाधान संभव। 3 नंबर बिट कोन कहूची kx minus 2y plus 6 is equal to 0 4x minus 3y plus 9 is equal to 0 ताले केता हो एटा k by 4 is equal to minus 2 by minus 3 is equal to 6 by 9 that implies k by 4 is equal to 2 by 3 is equal to 2 3 6 sorry 3 2 6 3 3 9 is equal to 2 by 3 that implies k by 4 is equal to 2 by 3 that implies k is equal to 8 by 3 अर्थात k ର मूल्य 8 by 3 पाई सह समीकरण द्वय कोन हेबे असंख्य समाधान संभव। चतुर्थ बिट कोन कहूची 2x plus 3y is equal to 5 6x plus ky is equal to 15 ताले एटा को लिखि परिबी केते 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 6x plus ky minus 15 equal to 0 ताले a1 by a2 केता होबो 2 by 6 is equal to 3 by k is equal to minus 5 by minus 15 ताले 1 by 3 एटा 1 by 3 1 by 3 is equal to 3 by k is equal to 1 by 3 that implies 1 by 3 is equal to 3 by k that implies k is equal to 9 अर्थात k is equal to 9 पाई सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिबो बुझि पाइलो। तापरे फिफ्थ बिट कोन कहूची 5x plus 2y minus is equal to k आ गोटे कोन दैछि 10x plus 4y is equal to 3 एटा को केमति लिखि परिबी 5x plus 2y minus k is equal to 0 10 plus 4y minus 3 is equal to 0 ताले एटा को लेखो केते 5 by 10 is equal to 2 by 4 is equal to minus k by minus 3 एटा 1 by 2 एटा 1 by 2 ताने 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to k by 3 that implies 1 by 2 is equal to k by 3 that implies k is equal to 3 by 2 अर्थात k ର मूल्य 3 by 2 पाई सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिबो। 6th बिट कोन कहूची kx minus 2y minus 6 is equal to 0 4x plus 3y plus 9 is equal to 0 सेटा केमति लिखिबो k by 4 is equal to minus 2 by 3 is equal to minus 6 by 9 2 3 6 so 3 2 6 3 3 9 एटा भी minus 2 by 3 हला ताले k by 4 is equal to केता हो minus 2 by 3 that implies k is equal to minus 8 by 3 k is equal to केता हो minus 8 by 3 अतएव k ର मान minus 8 by 3 पाई सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव हबो बुझि पाइलो। लास्ट क्वेश्चन 1a रो लास्ट क्वेश्चन कोन कहूची k ର केउ मूल्य पाई निम्न रे थिबा दत्त सह समीकरण द्वयर असंगत हेबे अर्थ कोन असंगत हेबे अर्थ कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 एटा को हम सैटिस्फाई हेले हम जानिबा सह समीकरण द्वय कोन हेबे असंगत हेबे। फर्स्ट बिट कोन कहूची 8x plus 5y minus 9 equal to 0 kx plus 10y minus 15 equal to 0 ताले a1 by a2 केता हो 8 by k is equal to 5 by 10 is not equal to minus 9 by minus 15 एक कथा भूली जाओ बर्तन एतिकी को देखो काहेकि k टा 8 अछि ताले 8 by k is equal to 5 by 10 that implies k is equal to 80 by 5 sorry yeah k is equal to 80 by 5
ताले 16 अर्थात k ର मूल्य 16 पाई सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। 2 नंबर बिट कोन कहूची kx minus 5y minus 2 equal to 0 6x plus 2y minus 7 is equal to 0 एठी सेमती k by 6 is equal to minus 5 by 2 is equal to is not equal to minus 2 by minus 7 एक कथा भूली जाओ ए दुटा को देखो k by 6 is equal to minus 5 by 2 that implies k is equal to minus 30 by 2 समान minus 15 अर्थात k ର मूल्य minus 15 पाई सह समीकरण द्वय कोन हेबे ना असंगत हेबे बुझी पाइलो 3 नंबर बिट कोन कहूची kx plus 2y minus 3 is equal to 0 5x plus 5y minus 7 is equal to 0 एटी सेमती k by 5 is equal to 2 by 5 is not equal to minus 3 by 7 minus 7 एक कथा भूली जाओ ए दुटा को देखो k by 5 is equal to 2 by 5 that implies k is equal to 10 by 5 समान 2 अर्थात k is equal to 2 अर्थात k ର मूल्य 2 पाई सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। चतुर्थ बिट कोन कहूची kx minus y minus 2 is equal to 0 6x minus 2y minus 3 is equal to 0 ताले k by 6 is equal to minus 1 by minus 2 is not equal to minus 2 by minus 3 ताले मु लिखि परिबी k by 6 is equal to 1 by 2 काहे कि माइनस माइनस कटि गला that implies k is equal to 6 by 2 समान 3 अर्थात k ର मूल्य 3 पाई k ର मूल्य 3 पाई सह समीकरण द्वय असंगत है। फिफ्थ बिट कोन कहूची फिफ्थ बिट कहूची x plus 2y minus 5 is equal to 0 8x plus ky minus 10 is equal to 0 एठी सेमती केते हबो 1 by 8 is equal to 2 by k is not equal to minus 5 by minus 10 एक कथा भूली जाओ ए दुटा को देखो 1 by 8 is equal to 2 by k that implies k a is equal to 16 k is equal to 16 अर्थात k ର मूल्य 16 पाई सह समीकरण द्वय कोन हेबे ना असंगत हेबे। सिक्स्थ बिट कोन कहूची 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 kx plus 3y minus 5 is equal to 0 ताहले 3 by k is equal to minus 4 by 3 is not equal to 7 by minus 5 एटा भूली जाओ ए दुटा को देखो 3 by k is equal to minus 4 by 3 that implies k is equal to 9 by minus 4 k is equal to 9 by minus 4 किमा minus 9 by 4 अर्थात k ର मूल्य minus 9 by 4 पाई सह समीकरण द्वय असंगत हेबे बुझी पाइलो तो एतिकी रे अनुशीलनी 1a समाप्त हला जदि स्टिल पिला माने कहार कोनोसी क्वेश्चन ने डाउट थाए ताहाले तमे कमेंट माध्यम रे जणैबो मु ताकू निश्चय क्लियर करिबी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास रे हमें 1b विषय रे आलोचना करिबा। धन्यवाद।